ग्लव्स होंगे आपके पास? ग्लव्स कौन से ग्लव्स? कोई भी चलेंगे। गोलगप्पे वाले ग्लव्स दो। गोलगप्पे वाले मतलब मेरे को बाल डाई करने हैं तो मेरे हाथ खराब ना हो। हाँ जी। कितने पेड़ दूं? एक ही पे। अच्छा जी। एक पेड़ इनको चाहिए, इनको एक ही पेड़ चाहिए। 5 रुपए। एक सेकंड थैंक यू। थैंक यू। Hello and welcome back to this crazy bitch channel who could have easily dyed her hair red by walking into a salon, but she chose to do it herself because content. So basically it's the day after Diwali and I don't really have a lot of work and I'm also really free and मेरे घर में 2 शादियाँ आ रही हैं, so if I fuck this up then I will have to pay a heavy price for it. लेकिन फिर भी I will be doing this today and so I'm going to be dyeing my hair red and I'm going to be using these 2 dyes, 1 dye actually, but I have 2 bottles in case I fuck up because I know that I will fuck up. And because last time I did this I was 19 years old and I did it myself तब भी because मैं तब भी इतनी ही like थी पागल and yeah, so I did fuck it up. So this time I ordered 2 tubes and this is a L'Oreal Magi Rail. I'm trying this dye for the first time. The dye I tried before was called L'Oreal High Color Highlights and that was specifically for dark hair और मेरे dark hair ही है like I've chopped off like this is like virgin, like this is virgin hair and like means मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है, like this is like as original as it can get. I've not bleached, I've not done like anything on it. So that is why I will be using a developer. So basically I'll be using this 20 volume developer जो box dyes के साथ आता है color, that is 10 volume. This is 20 volume. So this will do the bleach wala kaam because if you just go ahead and dye your hair with just this dye that won't do anything, आपको कोई color ही नहीं आएगा. So you need some like bleaching agent but you don't want like a harsh bleaching agent. I'm already putting my hair through a lot of shit by coloring my hair myself, so I'm just going to use this one thing which is a 20 volume developer and yeah, so should we start? आपको अपने बाल खुद डाई करने चाहिए or you've had a breakup or maybe your career isn't going so well or maybe you quit your job या फिर ऐसे ही आपको मन कर रहा है to do something fun, like आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है. तो in my case all 3 reasons सब कुछ हुआ है मेरे साथ, so I'm going to dye my hair but these are the things that आप से मतलब आपको मन कर रहा हो तो you should go for it. Like I would totally ask you to dye your hair yourself. Even if you fuck it up, it's like great, मज़ा आ जाता है. And I'm going to be using this dye. इस पे लिखा है instructions that one part of this with 1.5 part of this. तो मतलब maths weak है मेरा, but like I think 1/3 of this and 2/3 of this. Yeah, now you know if I fuck up this is the this is the exact moment why I will because of weak math. But इसमें ना दे नहीं रखा कि ये कितना ml है. इसमें तो I know कि this is 250 ml. Yeah, this is 250 ml but I don't know how much ml this is. So I think कि मैं ऐसे eyeball करूँगी कि हाँ ये ठीक है, अब इससे आधा ज़्यादा डाल देते हैं. Okay, मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे नहीं पता है कितने ml का है. I'm just guessing कि ये 50 ml का है और ये 250 ml का है, तो मतलब इसका काफ़ी कम यूज़ करना पड़ेगा. I'm going to fuck this up, I'm so scared. Anyways, I've opened this and then you do the thing which was you have to burst it open. And yeah, it's like a red color. Can you see it? Oh my god, I am really scared.
I am very, very scared. I am going to fuck this up. No, I should stay positive. Nay, I'm going to be positive and I'm not going to fuck it up. I'm going to do great. I'm going to do so fucking great. I have a deep appreciation for. Oh, it smells. I have a deep appreciation for people who make hair coloring videos because this is very, very spontaneous, and to do it in front of camera is even more spontaneous. I think मैं सारा dye use कर लूँगी because my hair is quite long. Not long, that long. मतलब I decided to chop it off just before my sister's wedding, which is the dumbest thing anyone can ever do, but I did it anyway. Anyways, I'm 22 years old and I'm going through a phase in my life where I'm losing a lot of people. Like in the last year, I'd have lost so many friends because, well, I don't know, I just lost a lot of friends. And just because I think I was doing too much for them, like मैं उनके लिए बहुत कर रही थी, but वो मेरे लिए इतना नहीं करते थे. So then I decided कि I'll stop doing it, and then you know, like that's when you know a friendship ends, when मतलब आपको पता चल जाता है कि they won't do that much for you. So I have like 2 friends now, which is actually काफ़ी peaceful. Use a phone and record this as well. I turned off the camera और मैं इसको पूरा ऐसे अच्छे से squeeze कर रही थी because you know मैं middle class हूँ and this is what I have been taught. Oh my god, कितना ज़्यादा dye था इसके अंदर, and I was going to give up. So let's go. That looks scary enough, guys. Don't do this at home. Okay, so हमने dye डाल दिया. Now we have to put this developer which I cannot open, and I'm filming this at my grandparents' house and they're not alive, by the way, so I can't ask them for help unless like I don't know. Yeah, so this actually doesn't smell that bad, but that smells like shit. Yeah, so now I'll of course use my phone camera. One like इतना ही developer डालना है और उससे आधा और, तो मतलब I don't know how I'm going to do this, but we're just going to wing it. I think कि 50-50 हो गया क्योंकि like हमने काफ़ी फैला दिया, and then we're going to do half more. Yeah, I think this is enough according to my shitty calculations. Okay, so we've taken this mixture and then we're going to... I didn't bring a brush, so I brought this brush which is very old and ये मेरे parents का है. So and I'm going to mix this. I think I fucked up. Like I don't know. I have a feeling I fucked up. But anyways, now अब तो हो गया है, तो काफ़ी. Oh, and by the way, ये जो भी मैं घर पे कर रही हूँ, if I went into a salon, it would have been much easier, and मतलब it would have cost me less also. और अगर आप अपने बाल खुद घर पे डाई करते हो, तो the first time you do it, it's going to be like the same. Like I think 2000 rupees में आपके पूरा global hair color हो जाता है. However, if you do it at home, I think this one tube cost me 600 rupees. And the developer cost me like 300 rupees, so 900. अच्छा ठीक है यार, फिर मतलब हुआ कम में हुआ. अगर इतने में मेरे बाल कलर हो जाते हैं, अगर इसमें नहीं होते then I have to use one more tube. Oh my god, it smells so bad. तो मुझे एक और यूज़ करना पड़ेगा. मैं बस सोचा कि ये मेंशन कर दूँ for anyone that's interested in the budget. But I was more so interested in ruining my life, so I just decided to do it at home. I've always done it at home. तो एक महीने में मेरी बहन की शादी है, तो I'll get that fading वाला color that the red gives, like the red जो brown में turn होता है, like that. That's like why I'm actually doing it. After I'm bored with that, then I'll go into a salon and get it fixed because तब तक मैंने अपने बालों का काफ़ी बुरा हाल कर दिया हुआ है, and I'll be like, I need a professional. So now we're going to section our hair. I have a mirror here. मैंने मतलब एक मिरर यहाँ पे रखा है. I should probably comb my hair. Let me comb my hair first. Sorry guys. Yesterday मैंने अपने बाल कलर नहीं किए थे, कर्ल किए थे because it was Diwali, so that's why my hair looks like frizzy mess. So yeah, now we are going to section our hair like ऐसे ही अंदाजे से because हमने अभी तक कुछ भी नाप तोल के तो किया नहीं है. So I'll do the top half later. I'll do the bottom first. ठीक है, तो we will start with this.
So oh yeah, I bought gloves also because you should wear gloves because जो 20 वॉल्यूम डेवलपर है, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग. मैंने लास्ट टाइम ये किया था, मैंने बिना ग्लव्स के किया था, एंड देन माई इंटायर हैंड्स वर रेड, लाइक नो नॉट रेड, दे वर वाइट, लाइक द डेवलपर गॉट स्टक ऑन माई फिंगर्स एंड आई थॉट कि मैंने गूगल किया तो गूगल ने बताया आई हैव अ 3rd डिग्री बर्न. एंड देन ओह माय गॉड, मेरे को बहुत डर लग रहा था. नॉट बिकॉज आई हैव अ 3rd डिग्री बर्न, बिकॉज मेरी मम्मी बहुत मुझे डांटती कि व्हाई डिड यू डू दिस. तो प्लीज़ वेयर ग्लव्स बिकॉज मेरे साथ हो चुका है. एंड द डेवलपर गॉट स्टक ऑन माई फिंगर्स एंड माई पूरी फिंगर्स वाइट हो गई थी एंड आई हैड टू लाइक, मेरे को अपना हाथ रनिंग वाटर के नीचे रखना पड़ा था फॉर लाइक 10 minutes एंड देन वो वापस से नॉर्मल हुई थी. एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज आई वाज लाइक शिट, व्हाई आर माई फिंगर्स वाइट. एंड इट डिडंट बर्न और एनीथिंग, लेकिन व्हेन आई गूगल्ड इट सेड आई हैड अ 3rd डिग्री बर्न. सो दैट्स नॉट ट्रू दो, आई वाज फाइन. आई एम सो स्कैर्ड. इट्स 4:45 राइट नाउ. तो देखते हैं कि एप्लीकेशन आंखों में क्यों लग रही है यार ये. ऑल्सो कुछ बिछा लेना बिकॉज आई थिंक मैं गंदा कर दूँगी. मैंने कब कैसे किया था ये पहले, बिकॉज दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट. ऑल्सो गाइस डू वेयर लाइक मतलब पुराने कपड़े, ब्लैक कपड़े, व्हाटएवर, जिससे कलर ना जाए. और हाँ, और वैसलीन भी लगानी होती है फेस पे, जो मैं भूल गई, सॉरी. और जो मैंने नहीं लगाई है बाय द वे. सो इफ़ आई एंड अप रेड देन दैट्स ऑल्सो ऑन मी. जब भी आप बाल कलर करते हो तो लाइक यू कलर योर हेयर राइट, एंड देन फॉर सम रीज़न यू स्टार्ट मिसिंग लाइक द होल टाइम. आपको कोई और कलर चाहिए होता है, बट एज सून एज यू स्टार्ट कलरिंग योर हेयर यू आर लाइक शिट यार, कितने अच्छे तो है हमारे बाल. एंड इट्स लाइक वी आर सो इनडिसाइसिव, और आई एम इनडिसाइसिव. व्हेन यू डाई योर हेयर एट होम, हम इतना गंदे से तरीके से करते हैं उसे डाई कि ना अपने आप ही हाईलाइट्स बन जाती हैं एंड दे लुक वे मोर नेचुरल. नॉट दैट कि मतलब नेचुरल लग सकती हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि लोग लाल बालों के साथ, स्टिल दे लुक वे मोर नेचुरल देन इफ़ यू गेट हाईलाइट्स मतलब बाद में. बिकॉज आफ्टर वाइल योर हेयर, व्हेन योर हेयर गोज ब्राउन, लाइक द रेड ब्लीड्स राइट आफ्टर लाइक आई डोंट नो लाइक 3-4 months. Yeah, so you're left with brown hair, and then like the brown hair, because you did a shit job at applying it, तो ना बहुत अच्छे लगते हैं because it looks like you have natural highlights and they're not like mimic, जैसे वो mimic करते हैं salon में. I hope you watch this video till the very end for the outcome. और try करना that you don't touch your roots that much because मतलब roots नहीं touch करनी होती हैं apparently. बट अब हम कितना ही कर सकते हैं, मतलब प्रिकॉशन कितना ही ले सकते हैं घर पे, राइट, लाइक फक दैट. ओके, सो अब मेरे नीचे वाला वाला हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई हेयर दैट आई टाइड हियर. यू नो, मैंने बहुत ज़्यादा डाइंग हेयर के ट्यूटोरियल्स देखे हैं ऑनलाइन. आई थिंक आई सीन लाइक ऑल ऑफ देम. मैंने इतनी रिसर्च करती हूँ ऑन हेयर, मतलब नॉट रिसर्च बट लाइक व्हेनेवर आई एम डाइंग माई हेयर आई डू रिसर्च. लास्ट टाइम मैंने डिफरेंट डाई से किया था, इस बार मैं डिफरेंट डाई से कर रही हूँ. सो देयर इज दिस अनदर लेवल ऑफ थ्रिल दैट कम्स व्हेन यू डाई योर ओन हेयर, यू नो. आई टोटली रेकमेंड यू डू इट. आई डोंट थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब. Wing it, guys. Wing it like everything else you in life. Just wing it. We like living on the edge, and the edge is a great place to live. आपको अपने बाल इतने कलर करने चाहिए that you refer to your hair as phases. लेकिन रिमेंबर मेरे बाल जब लाल थे उस टाइम पे हमने ये किया था. रिमेंबर जब मेरे बाल काले थे और फिर वाइट तो अपने आप हो जाते हैं, right? When you age. So it's like, remember when this happened? Remember my hair was green? इतने बाल डाई करने चाहिए आपको. Should always keep extra for emergencies. Be prepared. Life's short to run out of dye. I'm mixing a little bit of more because I want good coverage. I want to do a good job. You know, ऐसे मैं नाम नहीं डुबा सकती अपना. I have some responsibilities. 130 subscribers who are watching me. I think I have done a decent job. Gloves पहनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है because my hands still got stained. Yeah, and now I'm just going to. It's 5:11 right now. I think I'm going to wash my hair at 5:45. If this doesn't work, I'm going to cry. Like
अगर फॉर्मूला गलत हो गया और मेरे बाल कलर नहीं हुए then I'm going to cry because this has taken a lot of time and effort and courage and capabilities. Okay, so I am really hoping that this will work. So it's been 2 days since I colored my hair and this is what the final color looks like. Let me take this off. But this is what it looks like. Colors are a little distorted, but yeah, you know how my scalp looks, बिल्कुल ऐसा ही pinkish red hair. Might look a little brown. I don't know. I'll just like try to fix it in the editing. But yeah, this is the final look. And if you want to go for like a darker red, मतलब अभी भी कुछ मेरे बाल थोड़े से it might look from afar that they are from very far, मतलब 20 किलोमीटर दूर नहीं, from like very far maybe somebody might not even notice my color. Actually देख लेंगे वैसे तो, but still you can see that it's like a cherry red. And if you want like more of a red like, then you can go for a 40 volume developer. I only went for a 20. 40 is the highest you can go. So depending on what color shade you want, you can, you know, choose your developer. And although I'm not a beauty vlogger and like I'm absolutely not a professional, but I have done this a few times, so yeah, if you do go for a 40 volume developer, आप में बहुत cuts हैं, मेरे में तो इतने हैं ही नहीं. Anyways, so this is my mic that I'm holding. And also yes, so if you watched my video all the way here where I literally just colored my hair, you would know that my videos are normally not about dyeing my hair, but they are about absolutely random things in life and general. So you should check out my other videos and also check out my Instagram page. And also that's about it. I will continue to make other types of content. Thank you for watching my video. साडी वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कमेंट ज़रूर करियो और साडी नवी वीडियो ਲਈ सब्सक्राइब टू सूरी नॉट सॉरी.